Hello everyone, let's welcome to our YouTube channel Physics for UG. So in this video we shall solve question 51 to 100 of the PG Entrance Exam 2026 CPET Common PG Entrance Test. इस वीडियो में हर क्वेश्चन के साथ कंसेप्ट भी समझेंगे ताकि सिर्फ आंसर याद ना रहे बल्कि एग्जाम में सिमिलर क्वेश्चन भी कॉन्फिडेंटली कर पाओगे. ओके, विदाउट वेस्टिंग मच ऑफ आवर टाइम लेट्स स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 51. Okay, the focal length of a plano convex lens is what? R by n minus 1, r by r into n minus 1, n minus 1 by r and 1 by r. So इस क्वेश्चन हमारा लेंस मेकर फार्मूला से आया है. लेंस मेकर फार्मूला क्या होता है? लेंस मेकर फार्मूला 1 by f is equal to mu minus 1 into 1 by r1 minus 1 by r2. This lens is plano convex lens. So plano convex lens means the palar radius, this is the lens. So for this part, this r1 part, radius r1 part will be infinity because this is plane surface. अगर ये प्लेन सरफेस होता है तो रेडियस उसका इन्फिनिटी आएगा, लेकिन जो सेकंड वाला सरफेस है वो लेफ्ट साइड बेंड होता है. तो लेफ्ट साइड बेंड का मतलब इसका रेडियस r होगा लेकिन नेगेटिव आएगा क्योंकि वो लेफ्ट में बेंड होता है. राइट में बेंड होगा तो पॉजिटिव होगा, लेफ्ट में होगा तो नेगेटिव होगा. सो पुटिंग दिस r1 और r2 वैल्यू इन दिस इक्वेशन वी कैन फाइंड द आंसर. व्हाट विल गेट? 1 by f is equal to mu minus 1 into 1 by r1. 1 by r1 का मतलब क्या होगा? 1 by infinity. minus 1 by r2 का मतलब क्या है? 1 minus 1 by r. So what is the value? That is mu minus 1 into 1 by infinity का value 0 होगा. 1 by infinity 0. This is 0. Minus minus plus. So plus 1 by r. So that is equal to mu minus 1 by r. So what is f? F is equal to r by mu minus 1. F is equal to r by mu minus 1. So option म्यू. ओके, म्यू द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स. सो इन दिस ऑप्शन लिखा हुआ है हमको एन. एन क्या है? एन होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स. सो आंसर विल बी आर बाई एन माइनस 1. सो आर बाई एन माइनस 1, ऑप्शन ए विल बी द आंसर. क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 52. द ऑब्जेक्टिव ऑफ कंपाउंड माइक्रोस्कोप फॉर्म्स. Remember, in a compound microscope there are two lenses. One is objective and another is eyepiece. So initially the objective forms the image which is basically real and inverted. For the objective image that is real and inverted, and for the eyepiece that is virtual and erect. Virtual and erect. So the question objective of compound microscope forms real and inverted image. Real and inverted, option number B. चलिए क्वेश्चन नंबर 53. Chromatic aberration occurs because reflection varies, refractive index depends on wavelength, diffraction strong, polarization. So what is chromatic aberration? Chromatic aberration basically refraction or bending of different wavelengths of light at different angles. So this is known as dispersion. The lens cannot bring all colors to a single focal point. So let's understand. Suppose this is a lens. Okay, there are different lights. There are different lights incident on this lens. अगर हर कलर को लाइट को हम इंसिडेंट करेंगे तो क्या होगा? हर कलर का वेवलेंथ अलग अलग होता है. रेड का वेवलेंथ मैक्सिमम होता है, वायलेट का वेवलेंथ मिनिमम होता है. तो इसीलिए उसका जो फोकल पॉइंट, फोकस पॉइंट वो हमारा डिफरेंट डिफरेंट आएगा. वहाँ पे एक आएगा, वहाँ पे एक आएगा. अगर वहाँ पे रेड आएगा तो उस पर वायलेट आएगा. सो जो रेड वायलेट डिफरेंट डिफरेंट कलर्स ऑफ डिफरेंट डिफरेंट फोकस पॉइंट्स. सो दिस इज नोन एज क्रोमैटिक aberration. So what is the reason? Chromatic aberration occurs because, and this refractive index, because red different colors are different wavelengths as well as different refractive index, because refractive index mu depends upon the wavelength lambda. Okay, the formula is mu equal to a plus b by lambda square, but usually we take refractive index mu proportional to 1 by lambda, inversely proportional. Okay, so what the reason? For different focal points, the reason is refractive index depends on wavelength. So this is the reason. As per my explanation, the reason will be 53, question number B, answer B. So in this question 54, the quark content of a neutron. न्यूट्रॉन का क्वार्क कंटेंट क्या होगा?
क्वार्क का मतलब उसका ऑप क्वार्क होता है, उसका ऑप होता है, उसका डाउन भी होता है। ऑप का चार्ज होता है 2/3 एंड डाउन का होता है -1/3 सो न्यूट्रॉन इज न्यूट्रल, इसका चार्ज जीरो होगा। ओके, तो क्या कंटेंट होगा न्यूटन का जो क्वार्क कंटेंट होगा उसका न्यूटन का होगा UDD, दैट इज UDD। बिकॉज क्योंकि U का 2/3, D का -1/3, D का -1/3, सो उसको मिला के क्या होगा आंसर, इफ यू add all this you can get answer 0, so neutron is neutral, so that is UDD, so उसके बाद प्रोटॉन का क्या होगा, प्रोटॉन का चार्ज कितना है, प्रोटॉन का चार्ज 1e होता है, प्लस e होता है, सो उसका वैल्यू आएगा, प्रोटॉन का जो क्वार्क कंटेंट होता है उसका UD होता है, क्योंकि वो वाला U का चार्ज क्या है 2/3, U का चार्ज 2/3, उसका चार्ज -1/3, सो उन तीनों को मिला के आंसर क्या आएगा 4/3 -1/3, दैट इज 3/3, दैट इज +1, सो प्रोटॉन का क्वार्क कंटेंट क्या होगा +1 होगा, न्यूटन का 0 होगा। ओके, प्रोटॉन का UUD, न्यूटन का UDD। फॉर द क्वार्क कंटेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन का क्वार्क कंटेंट कंपोजिशन, नो क्वार्क कंपोजिशन, इलेक्ट्रॉन में कोई भी क्वार्क नहीं है। ओके, इसलिए हम बोल पाएंगे कि न्यूट्रॉन का क्वार्क कंटेंट UDD होता है और प्रोटॉन का क्वार्क कंटेंट UWD होता है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 55, द मेडिएटर ऑफ स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन इज, मेडिएटर मीन्स थ्रू विच, किसकी वजह से वो इंटरेक्शन होता है, किसकी वजह से। ऑलरेडी वी नो देयर आर 4 इंटरेक्शंस, सो इफ यू रिमेंबर दैट वन इज electromagnetic interaction, and this interaction is mediated by photons, this is made by photons. Similarly, the gravitational interaction mediated by gravitons are particles, so these are mediated by gravitons. Similarly, for strong interaction, the particles which are mediated by, these are the gluons, and gluons binds quarks, and gluons bind quarks to form proton as well as neutron. So for strong interaction, the mediating particle will be gluons, so the mediator of strong interaction will be gluon, answer. Okay, चलिए क्वेश्चन नंबर 56, the electric charge of an op quark, the electric charge of an op quark, already we discussed in question of 53. ऑप का चार्ज क्या होगा, ऑप का चार्ज होगा +2/3 एंड डाउन का चार्ज होगा -1/3। क्लियर, दिस इज वेरी फंडामेंटल क्वेश्चन। द वीक इंटरेक्शन इज मेडिएटेड बाय ग्लूऑन्स, फोटॉन्स, पाइons, W and Z bosons. Okay, the weak interaction is mediated by W and Z bosons because स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन ग्लूऑन्स, फोटॉन्स होता है, इंटरेक्शन जो इलेक्ट्रॉनिक इंटरेक्शन होता है इसमें। ओके, W and Z बोसॉन्स में क्या होता है, वीक होता है, तो वीक इंटरेक्शन इज मेडिएटेड बाय W and Z बोसॉन्स। ओके, and this remember, and this weak interaction is not mediated by photons, gluons as well as pions. Okay, next चले क्वेश्चन नंबर 58, the Higgs boson is associated with what is Higgs boson? So Higgs boson is basically completely neutral. It has no electric charge, and this particle is responsible for giving mass to fundamental particles through Higgs mechanism, and this is responsible for, once again I am repeating, this is responsible for giving mass to fundamental particles. फंडामेंटल पार्टिकल को मास देने के लिए किसके वजह से, हिग्स मैकेनिज्म के वजह से मास देने के लिए वो हिग्स बोसन हमारा यूज होता है। तो दैट इज द प्राइमरी रीजन। सो क्या होगा, एसोसिएटेड विथ मास जनरेशन मैकेनिज्म, क्योंकि हिग्स बोसन मास जनरेशन के साथ लिंक्ड होता है। ओके,
for the commutator of xp, very simple, xp is equal to is cross. X is the position vector and p is the momentum, outer bracket is cross. Question number 60. The ground state energy of 1D harmonic oscillator is, the harmonic oscillator formula is n plus half h cross omega. So for ground state this n equal to 0, so the answer will be half h cross omega, and this is also called as 0 point energy. So answer will be half h cross omega. 60. Next, 61, the direct question. The momentum operator in position penetration is given by momentum p is cap of operator, that is minus ih cross del by del x or minus ih cross dy dx. This is the momentum operator formula. Momentum operator minus ih cross dy dx. Question 61 complete. Okay, next is question 62. The work function of a metal is 2 electron volt. Work function of a metal 2 electron volt. If light of energy 4 eV is incident on a metal, the maximum kinetic energy of emitted electrons will be. This is completely based upon the photoelectric effect. As we know, suppose this is a metal, it has a certain work function W0. Suppose there is a light incident upon it and the energy of that light is E. Okay, फोटोन का एनर्जी क्या होता है, ई होता है. W0 क्या होता है, वर्क फंक्शन होता है. किसका वर्क फंक्शन, मेटल का वर्क फंक्शन और इलेक्ट्रॉन का वर्क फंक्शन. और एनर्जी एंड W0, इफ एनर्जी E is more than W0, then emission is possible, and the rest amount of energy is converted to kinetic energy of electron. जो एनर्जी रिमेनिंग रह जाता है वो इलेक्ट्रॉन का काइनेटिक एनर्जी बन जाता है. तो क्या इक्वेशन आएगा, सो काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू एनर्जी ऑफ फोटन माइनस वर्क फंक्शन. ओके, सो क्वेश्चन में क्या लिखा है, वर्क फंक्शन 2 होता है. वर्क फंक्शन 2, इफ द लाइट ऑफ एनर्जी 4, देन द मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी विल बी लाइट एनर्जी 4 minus 2. The answer will be 4 minus 2 is equal to 2 electron volt. This is completely a fundamental part from photoelectric effect. So answer will be 2 electron volt, option B. Okay, चलिए next question. If two operators commute, they have, first is they have no common eigenstate, they are identical, they have simultaneous eigenstates, they have same eigenvalues always. Okay, this is exactly a fundamental concept in quantum mechanics. So the answer will be they have simultaneous eigenstates or they have simultaneous eigenfunction. So in that case the commutator bracket will be 0 and AB equal to BA. If two operators commute, then they have simultaneous eigenstates, AB equal to BA. Okay, next question is the expectation value of an operator A for a normalized psi. This is the very simple fundamental formula. Expression value, suppose A का expectation is equal to integration, that is psi star A psi dx. So मिडिल में ऑपरेटर आएगा, उसके बाद कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट ऑफ psi star and psi दोनों साइड में आएगा. So the answer will be option B. Psi star A psi is the expression value of an operator. Question number 65. A Hermitian operator has eigenvalues that are always real. This is also simple question. Always real. Hermitian operator has eigenvalues that are always real. Okay, chaliye question 66. The transmission probability in quantum tunneling is what? 0 always, 1 always, 0 non-zero for finite barrier and negative. It is quantum tunneling. Suppose there is a barrier, there is a finite barrier. Suppose a particle enters from this side, एक पार्टिकल आएगा तो उसका प्रोबेबिलिटी क्या होगा, उसको पार करने जाने का, ट्रांसमिशन होने का, ट्रांसमिट होने का, उस बैरियर को
क्रॉस करने का उसका प्रोबेबिलिटी क्या होगा, प्रोबेबिलिटी। देखो इन क्लासिकल मैकेनिक्स समथिंग डिफरेंट, there is no probability, there is exact values, but in quantum mechanics we have the probability, we can find the exact location, we have to find the probability of something. So transmission probability is basically, so उसका ट्रांसमिशन वैल्यू रहेगा, आएगा नहीं आएगा, डेफिनेटली आएगा ट्रांसमिशन प्रोबेबिलिटी, क्योंकि ट्रांसमिशन का मतलब ट्रांसमिशन का वैल्यू क्या होगा, एंड दिस वैल्यू इज नॉन जीरो। ओके, एंड ट्रांसमिशन प्रोबेबिलिटी टी का वैल्यू जीरो और 1 के बीच में आएगा। Okay, and this value and transfer this value is never zero, unless the barrier is infinite। अगर बैरियर इन्फाइनाइट होगा तो उसका वैल्यू जीरो होगा, नहीं तो फाइनाइट होगा तो उसका वैल्यू ज़ीरो नहीं होगा, क्योंकि उसका एक प्रोबेबिलिटी होता है, उसका चांस होता है उसको क्रॉस करने का, वो बैरियर को क्रॉस करने का एक चांस होता है, उसका प्रोबेबिलिटी होता है। इसलिए ट्रांसमिशन प्रोबेबिलिटी, ट्रांसमिट करने का प्रोबेबिलिटी क्वांटम टनलिंग में क्या होगा, नॉन जीरो होगा फॉर फाइनाइट बैरियर। ओके, क्वेश्चन नंबर 67, Bragg's law is given by Bragg's law is basically 2d sin theta equal to n lambda. What is lambda? Lambda is the wavelength, n is the order of diffraction, and sin theta is the angle of scattering, and d is the interplanar spacing. So 2d sin theta equal to n lambda, option number A. Question 68. The density of states for free electrons in 3D varies as. Density of states, do you remember, for 3D case, for 3D the density of states for 3D case it is related with energy e का root over, for 2D case related with energy e power 0, for 1D case it related with e to the power minus half, मतलब 1 by root over f. That is the density of states for 3 dimensions, 1D 2D 3D. So here in the question 3D का वैल्यू क्या होगा, रूट ओवर ऑफ ई आएगा। 68. ओके, in intrinsic semiconductor formally lies what, in conduction band, in valence band, near mid gap, outside band gap. Okay, remember Fermi level is the level that is highest occupied. So in intrinsic semiconductor, intrinsic, suppose this part is our valence band and this is our conduction band. Okay, this is the band gap. Fermi level lies exactly in between this, in between the two bands. That means this is the Fermi level. So the value of Fermi energy EF is equal to EC plus EP by 2, energy of conduction band, energy of valence band divided by 2 equal to Fermi energy level. So this Fermi level lies exactly mid gap. Okay, 70. Question number 70. The effective mass of electron is related to energy dispersion by what formula? Okay, effective mass का formula क्या होगा? Remember, इफेक्टिव मास का फॉर्मूला होता है m स्टार इफेक्टिव मास इज इक्वल टू h क्रॉस स्क्वायर d स्क्वायर e by dk square whole to the power -1. So the answer will be 1 by m star is proportional to d square e by dk square. Option number B. This is the formula, and from this formula you can directly identify the option. Okay, 7. Phonons are quanta of what? Phonons are quanta of lattice vibrations, because photons are quanta of light. Photons are quanta of light. Similarly, phonons are quanta of lattice vibration, or these are the elastic waves or sound waves. Okay, so phonons has been derived from the word phone. phone से phonon आता है, फोटो से फोटोन आता है. फोटो मीन्स लाइट. सो लाइट से जो पार्टिकल होता है वो फोटन, एंड इलास्टिक वेव और लैटिस वाइब्रेशन से जो वेव क्रिएट होता है उसका जो फंडामेंटल पार्टिकल होता है उसका जो क्वांटा ऑफ एनर्जी होता है उसको हम फोनन बोलते हैं. किसका? लैटिस वाइब्रेशन का. और इलास्टिक वेव्स का फोनन बोलते हैं, एंड लाइट वेव इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का हम फोटोन बोलते हैं. ओके,
72. The dBm model predicts that heat capacity at low temperature varies as we know, or all of you know, that Debye TQ law. Debye TQ law means the specific heat is proportional to T to the power 3. So answer will be as per Debye TQ law. 73. In metals, the band gap is 0 or overlapping in metals, and in non-metals the band gap is very large, and for semi-metals or semiconductors the band gap is very small, and for semiconductors the band gap is around 1.1 eV. For silicon is 1.1 eV, and for germanium 0.7 eV. So like that. And for non-metal or insulator the band gap is very large, okay. So for metal the band gap will be 0 and overlapping. Overlapping means the valence band and conduction band overlap each other, or they have a zero energy gap. Question number 74. Hall coefficient sign indicates what? Hall coefficient sign indicates the majority carrier type. Okay. Carrier type क्या होता है? पॉजिटिव का मतलब होल होता है p टाइप में, और नेगेटिव इलेक्ट्रॉन होता है n टाइप में. ओके. तो हॉल को अगर तो हॉल का कोएफिशिएंट हमको क्या बताता है? हॉल कोएफिशिएंट हमको मेजरली चार्ज कैरियर का टाइप बताता है, इलेक्ट्रॉन या होल्स. ओके. द मेसनर इफेक्ट refers to what? Meissner effect refers to zero resistance, infinite conductivity, expulsion of magnetic field, high temperature, superconductivity. So the answer is expulsion of magnetic field. Why? Because in case of Meissner effect, what happens? The magnetic field lines pass through the material. Okay, when T is more than Tc, Tc is the critical temperature. When T is more than Tc, and through the material, the magnetic lines are expelled, are repelled. Okay, that means they don't pass through that, are expelled away from that material. So this is the case of Meissner effect. It occurs when T is less than Tc. क्रिटिकल टेम्परेचर से टेम्परेचर लो होता है तो हम इसको मेसनर इफेक्ट बोलते हैं. एक्सपल्सन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड फ्रॉम द मटेरियल. So what is Meissner effect? Meissner effect is basically the expulsion of magnetic field from a material as its transition to a superconducting state below critical temperature. अगर टेम्परेचर क्रिटिकल टेम्परेचर से कम होगा तो उस टाइम पे मैग्नेटिक फील्ड का जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स होता है वो मटेरियल से एक्सपल्सन हो जाता है और उसके अंदर पास नहीं करता है. उसको हम मेसनर इफेक्ट बोलते हैं. ओके. नेक्स्ट क्वेश्चन. The reciprocal lattice is mainly used in what? Reciprocal lattice is used in diffraction analysis, because reciprocal lattice and diffraction, X-ray diffraction are correlated parts. Fluid mechanics no, thermodynamics no, geometrical optics only no. The diffraction, Bragg's law, diffraction, X-ray diffraction, and also atomic scattering factor, geometrical structure factor, all are parts of reciprocal lattice. So this is related with the diffraction analysis. Okay. Next is question number 77. देखो ये क्या क्वेश्चन होता है. 77. टाइम डायलेशन फॉर्मूला इज. टाइम डायलेशन क्या होता है? टाइम का इंक्रीज होना. दैट मीन्स अगर हम इसको फॉर्मूला लिखेंगे क्या होगा? गामा इंटू प्रॉपर टाइम इज इक्वल टू अपरेंट टाइम. प्रॉपर टाइम के हिसाब से अपरेंट टाइम ज़्यादा होगा. दैट इज कॉल्ड टाइम डायलेशन. सो इज प्रॉपर टाइम गामा इंटू T0 और T0 इक्वल टू प्रॉपर टाइम T. सो गामा का वैल्यू क्या होता है? गामा का वैल्यू 1/1 माइनस v² by c² रूट ओवर इक्वल टू T. सो व्हाट इज द आंसर? विल बी T equal to T0 by 1 minus v² by c². So this is the correct option. So option number A is the answer, the time dilation. In case of length contraction, it happens the opposite thing. अलग होता है. क्या होता है? ये जो लेंथ कंट्रैक्शन, लेंथ कंट्रैक्ट हो जाता है. लेंथ कंट्रैक्शन, that means apparent length will be less than the proper length. Okay, so this is the reverse formula. 78. A moving circle is observed perpendicularly. It appears what? Circular, parabolic, elliptical, hyperbolic. Remember,
A moving circle appears elliptical due to length contraction. Okay, moving circle. If a circle is there and due to length contraction, this appears to be elliptical. This happens to be elliptical. So this is the answer due to length contraction. 79. The relativistic momentum P of a particle of mass m is given by P is equal to mb. P is equal to mb. What is m? M is equal to m naught by 1 minus b square by c square root over, that is equal to into v. So answer will be m naught b by option B is the answer. M naught b by 1 minus b square by c square root over. Okay, that is momentum. Question number 80. Maxwell-Boltzmann particles statics applies to fermions, bosons, photons, classical distinguishable particles. Maxwell-Boltzmann is purely classical thing. Fermions is quantum mechanics, fermion means Fermi statics, and bosons, Bose-Einstein statics. So for Maxwell-Boltzmann classical thing, so classical we can use the classical distinguishable particles. Okay, Maxwell-Boltzmann statics. Fermion applies for Fermi-Dirac, and the boson applies for Bose-Einstein statics. Okay, question number 81. Heat capacity at constant volume is defined as heat capacity constant volume CV. CV का फार्मूला क्या होता है? CV का फार्मूला del Q by del T और कांस्टेंट V होता है. स्पेसिफिक कांस्टेंट वॉल्यूम प्रेशर CP क्या होता है? del Q by del T और कांस्टेंट प्रेशर. लेकिन इसमें तो ऑप्शन नहीं है, तो कौन होगा आंसर? रिमेंबर वी नो फ्रॉम फर्स्ट लॉ dq equal to du plus dw. This is the first law of thermodynamics. dq equal to du plus pdv, that is dq. Remember what is cv? cv क्या होता है? cv होता है स्पेसिफिक हीट अगर वॉल्यूम कांस्टेंट रहेगा. Okay, if you take volume constant in this expression, if volume constant then dv equal to 0, so what will happen? dq equal to du. So in place of dq you can write du, you can write du by dt at constant v, because but for cv we can't write, we can write in this way, because at pressure, when pressure is constant we can't write dq equal to du, but when volume is constant we definitely write dq equal to du, because from first law dq equal to du plus pdv. Clear? So answer will be specific heat du by dt constant volume. Question number 82. A polyatomic gas gamma equal to 4 by 3 at pressure P is compressed to 1/8 of its volume adiabatically. Then the pressure will change to what? Okay, process is adiabatic. Adiabatic process. Volume is compressed to 1/8 of its volume. Okay, so what the equation? Gamma equal to, remember 4 by 3 given in the question. So the equation is pv to the power gamma equal to constant. So you can write from this expression p1 v1 to the power gamma equal to p2 v2 to the power gamma. So what is expression? P1 by p2 equal to v2 by v1 whole to the power gamma. Okay, what is p1? P1 is the initial pressure that is given in the question. P by p2 is equal to, what is v2? v2 is 1 by 8th of वॉल्यूम. सो v1 is 1. सो उसका पावर क्या होता है? उसका पावर गामा. गामा का वैल्यू क्या होता है? 4 by 3. सो उसका वैल्यू 1 by 8 का पावर 4 by 3 मीन्स 8 क्या होता है? 1 by 8. ये वाला 2 का पावर 3 होता है. सो 1 by 2 का पावर 3, उसके भी पावर कितना? 4 by 3. सो कैंसल. सो आंसर विल बी 1 by 2 to the power 4. सो दैट पार्ट इज P by P2 is equal to 1 by 16. So what is P2? P2 is equal to 16P. We need the final pressure, so P2 equal to 16P. Clear? Question number 83. The efficiency of a Carnot engine working between steam point and ice point is what? Steam point, ice point. Steam point क्या होता है? स्टीम पॉइंट होता है 100 डिग्री सेल्सियस एंड आइस पॉइंट क्या 0 डिग्री सेल्सियस. उसको हमको उस टेम्परेचर को हमको केल्विन में कन्वर्ट करना पड़ेगा, क्योंकि केल्विन में वैसा ही सिस्टम होता है. तो 100 सेल्सियस मीन्स 373 केल्विन एंड 0 सेल्सियस मीन 273 केल्विन. सो व्हाट द एफिशिएंसी? 1 minus T2 by T1. What is T2? T2 is the temperature of hot body.
दैट इज 1 माइनस 373 बाई 273। उसको सॉल्व किया जाए तो हमको आंसर क्या मिलेगा, आंसर मिलेगा हमको 26.81%। ओके क्लियर। 84 formal energy is defined as lowest energy level, no. Average energy, no. Binding energy, no. Highest occupied energy at temperature T equal to 0. So Fermi energy is basically the highest occupied energy at 0 Kelvin। 0 Kelvin में जिसका जो occupied highest occupied energy वाला होता है उसको हम 0 Kelvin में उसको हम Fermi energy बोलते हैं। ओके and all state above this and all state above the Fermi level state is empty and all state below this is filled. Remember, highest occupied energy at 0 Kelvin is called Fermi energy and all states above this level is empty and all state below this level is filled, completely filled. Okay, so answer will be highest occupied energy. This is Fermi level, highest occupied energy at T equal to 0. Question number 85. Mean free path of gas molecules is inversely proportional to what? Mean free path, temperature, molecular speed, pressure, gas constant, all these things. So what is the formula for mean free path? Mean free path lambda equal to k bt divided by root 2 pi d square t. This is the formula of mean free path. Kb is the Boltzmann constant, T is the temperature, d is the diameter and p is the pressure. So mean free path of a gas molecule is inversely proportional to what? Temperature directly, no. Pressure, yes. Gas constant, no. Molecular speed, no. Answer is pressure. Clear? Question number 86. Two stars A and B radiate maximum energy at 360 nanometer and 480 nanometer respectively. The ratio of their absolute temperature is what? The radiate maximum energy means which law? This is the question of Blackbird radiation and this is Wien's displacement law, that is lambda proportional to 1 by temperature. Okay, so from this part we can write the equation lambda 1 by lambda 2 equal to T2 by T1. Very simple. Lambda 1 by lambda 2 is given, lambda 1 is 360 and lambda 2 is 480 equal to T2 by T1. We need T1 by T2. हमको क्या चाहिए? T1 by T2. T1 by T2. So T1 by T2 क्या होगा? T1 by T2 आएगा lambda 2 by lambda 1, that is 480 by 360. उसको सॉल्व किया जाए, आंसर ये होगा 36 4 12 means that is 3 and this part is 4. So answer is 4 by 3. Option B, 4 by 3. Clear? Question number 87. In an atom, two electrons move round the nucleus in circular orbits of radius r and 2r. The ratio of the time taken by them to complete one revolution is what? Okay, remember, what is time? Time equal to distance by speed. Distance by speed. So distance is what? For a circular orbit, the distance will be 2 pi r and speed will be v. Okay, remember that time period proportional to radius by v and radius proportional to n square and velocity proportional to 1 by n. So as a result, the time period proportional to n cube. In Bohr's orbit, the time period proportional to n cube because radius proportional to n square and velocity proportional to 1 by n. So the answer will be n cube. So what is the question given? Two electrons move around the nucleus in circular orbits of radius r and 4r. The ratio of the time taken by them to complete one revolution is r and 4r. Means फ्रॉम स्टेट 1 टू स्टेट 2 बिकॉज रेडियस उसका r होता है, उसका 4r का मतलब n स्क्वायर का वैल्यू 4 आएगा. ऑर्बिट नंबर क्या होगा? 2. ऑर्बिट नंबर 2 का मतलब रेडियस 4r आएगा और ऑर्बिट नंबर 1 में रेडियस r आएगा. सो ऑर्बिट क्या होगा? ऑर्बिट 2, तो 2 का क्यूब क्या आएगा?
2 का क्यूब एन क्यूब, 2 का क्यूब का मतलब 8:1 87। चलिए क्वेश्चन में क्या लिखा है, क्वेश्चन में लिखा है रेडी आर एंड 4R, रेडी आर एंड 4R। So R means first orbit, 4R means second orbit. So its time period as time period proportional to t n cube. So answer will be 1 cube by 2 cube. That means 1 by 8 will be answer. 1 by 8 will be answer. Sorry, अगर उसको हम रिवर्स किया जाए तो उसका आंसर 8 by 1 होगा, लेकिन क्वेश्चन में क्या पूछा है, सर्कुलर ऑर्बिट्स ऑफ रेडी आर एंड 4R. So first and second orbit. So answer will be 1 by 8. Question number 88. The ion is a the ionization, that is sorry, the question is the ionization potential for hydrogen atom in ground state is what? आयनाइजेशन पोटेंशियल मीन्स आयन करने का कितना वोल्टेज ज़रूरत है हमको। आयन क्या है, अगर इलेक्ट्रॉन होता है ग्राउंड स्टेट में, उसको आयन किया जाए, उसका मतलब उस इलेक्ट्रॉन को हमको लेना पड़ेगा इनफाइनाइट स्टेट पर, बाहर लेना पड़ेगा। तो बाहर जाने में कितना एनर्जी हमको चाहिए ग्राउंड स्टेट में, तो ग्राउंड स्टेट की एनर्जी क्या होगा, -13.6 होता है। उसको बाहर जाने के लिए हमको +13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का एनर्जी चाहिए, और एनर्जी 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट मीन्स 13.6 वोल्ट का पोटेंशियल चाहिए हमको। उस इलेक्ट्रॉन को बाहर जाने के लिए कितना एनर्जी चाहिए आयन बनाने के लिए, दैट इज आयनाइजेशन पोटेंशियल, दैट इज 13.6 वोल्ट। क्वेश्चन नंबर 89. Fine structure in hydrogen atom spectrum arises mainly due to what? It arises due to spin orbit interaction, that is fine orbit. Okay, what is fine structure? क्या होता है? Fine structure basically it is the splitting of single spectral line into closely spaced doublets. Suppose there is a single spectral line in presence of, due to spin orbit coupling, what happens? This split into two parts. So this splitting of a single spectral line into two parts is called fine structure. So this is due to the spin orbit interaction. चलिए next question 90. The selection rule for a dipole electric dipole transition is what? Delta L equal ±1. That is easy question, no need to discuss about that. In Stark effect what happens? In Stark effect the spectral lines split due to magnetic field, gravitational field, electric field, nuclear spin. Remember, due to electric field the splitting is called Stark effect, and due to magnetic field the splitting occurs is called a Zeeman effect, is called Zeeman effect. So electric field splitting is the Stark effect. Stark effect means electric field splitting, and Zeeman effect means magnetic field splitting. Okay, question 92. ठीक हो 92. The knee voltage for the silicon diode is what? knee voltage का मतलब क्या होता है, फॉरवर्ड बायस में this is the graph, this is the reverse bias graph. So this voltage is the knee voltage, that is V knee voltage. This is the voltage from which the current increases rapidly. This is the voltage in forward bias condition from which the voltage increases rapidly. So the knee voltage for silicon is 0.7 volt, and for germanium it is 0.3 volt. So this voltage is 0.7 for silicon, and this is for 0.3 for germanium. Clear? So answer will be silicon के लिए 0.7. Answer 93. The band gap of diamond is approximately, diamond band gap is very large, that is around 6 eV. So answer will be 5.5 eV, around 6 eV, that is 5.5 eV band gap. Okay, silicon का क्या होगा, silicon 1.1 band gap, silicon का band gap 1.1 eV, and germanium का band gap 0.7 eV. Clear? 94. The set of Miller indices for a plane cutting of intercepts
3a to b 4c is. This is the question of solid state physics. So you can easily find the Miller indices. Miller indices are basically three numbers indices which represent a set of parallel planes. So how to find Miller indices? So what are the intercepts? 3a, 2b, 4c. Intercepts are basically 3, 2 and 4. फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू टेक द रेसिप्रोकल ऑफ दिस इंटरसेप्ट. रेसिप्रोकल क्या आएगा? 1/3, 1/2, 1/4. इसको हम होल नंबर में कन्वर्ट करेंगे. होल नंबर कैसे करेंगे? उसका एलसीएम, डिनोमिनेटर का एलसीएम हम मल्टीप्लाई कर देंगे. एलसीएम क्या होगा? एलसीएम होगा 12. उसको मल्टीप्लाई किया जाए तो आंसर क्या होगा? 12. 1/3 मल्टीप्लाई होगा, उसको 4 होगा, उसका 6 होगा, उसका 3. 4, 6, 3. ओके, दिस इज द Miller indices 4, 6, 3. So Miller indices basically these are the numbers which represents a set of parallel planes and they can be obtained. How to find that indices? हमको पहले इंटरसेप्ट को लेना है, उसका रेसिप्रोकल लेना है, उसके बाद हम इसको होल नंबर में कन्वर्ट करना है. कैसे करना है? अगर फ्रैक्शन होता तो हम जो डिनोमिनेटर कैल्शियम जो होता है उसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो होल नंबर में कन्वर्ट हो जाएगा. ओके, क्वेश्चन नंबर 95. The atomic packing fraction of simple cubic lattice is what? What is atomic packing fraction? That is the atomic packing fraction means volume of atoms by volume of unit cell. So volume of atoms in simple cubic lattice. In simple cubic lattice, the number of atoms is 1. So what is the volume of atoms? 4/3 pi r cube divided by in volume of unit cell will be a cube. Okay, how to find 4/3 pi r cube by a cube? Suppose this is the face. Okay, in a simple cubic lattice there is one atom and there is another atom. So this length is a, this length is a, cubical surface a. So this radius is r, this radius is r. So we can put 2r equal to a and r equal to a by 2. R equal to a by 2. So put here, that is equal to 4/3 pi a by 2 का होल क्यूब by a क्यूब. a क्यूब कैंसिल. सो आंसर क्या आएगा? 4/3 pi 1/8. 4/3 pi 2 का क्यूब 1/8. सो 4 कैंसिल, that is equal to pi by 6. आंसर pi by 6. ऑप्शन बी. 96. The energies of a particle in a box are what? N square pi square s cross square by 2m square. This formula you have to remember always. 97. If En is the energy of 10th state of harmonic oscillator, the expectation value of potential energy of a linear harmonic oscillator is what? Okay, एनर्जी का वैल्यू, एनर्जी ई एन का वैल्यू होता है एच क्रॉस ओमेगा एन प्लस हाफ एंड पोटेंशियल एनर्जी वी एक्सपोनेंशियल वैल्यू पोटेंशियल एनर्जी उसका वैल्यू क्या होगा? हाफ एच क्रॉस ओमेगा एन प्लस हाफ. सो एनर्जी डिवाइडेड बाई 2 इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी. सो फ्रॉम दिस एक्सप्रेशन, सो दैट विल बी ई एन बाई 2. दैट इज ई एन बाई 2. ओके, क्वेश्चन नंबर 98. A particle of mass m at rest decays into two particles of masses m1 and m2 having non-zero velocities. The ratio of de Broglie wavelengths of the particles lambda 1 by lambda 2 will be what? Okay, this is a little bit lengthy, not much. A particle, there is a particle at rest decays into two particles. One is m1 and there is m2. So it has velocity v1, it has velocity v2, and this particle is at rest. So by using the conservation of momentum, before and after momentum will be equal. So before will be momentum 0 because it was initially at rest. So after momentum what will be? m1 v1 plus m2 v2. So from that expression what will we get? m1 v1 is equal to minus m2 v2. Okay, so what we get? m1 by m2 equal to v2 by v1. Ignore the negative sign. m1 by m2 equal v2 by v1. What is lambda? lambda का फॉर्मूला होता है h by p.
that is h by mv. So lambda 1 by lambda 2 equal to inversely proportional, so m2 v2 by m1 v1. That means m2 by m1 into v2 by v1. ओके v2 by v1 के साथ m1 by m2 सेम होता है. v2 by v1 is same as m1 by m2. So by using m2 by m1 into m1 by m2, using this formula, this value, so answer will be 1. So answer will be 1. Okay, question number 99. The uncertainty in the velocity of a proton confined to a one-dimensional box of length 10 to the power minus 9 meter is given by what? The formula is like that. Answer principle, del x dot del p is equal to h cross by 2 or h by 4 pi is the value. Okay, what is del p? Del p is the mass and delta velocity. So answer the velocity will be delta v is equal to h by 4 pi m delta x. Okay, put the values. s value क्या आएगा? 6.6 10 to the power minus 34 divided by 4 into pi 3.14 into m क्या होता है? प्रोटॉन का मास. प्रोटॉन का मास क्या होता है? 1.6 into 10 to the power minus 27 and delta h is basically the length 10 to the power minus 9 10 to the power minus 9. उसको सॉल्व किया जाए तो हमको आंसर मिलेगा क्या? 31.6 मीटर पर सेकेंड. ओके, दिस आंसर. Next question. In the Raman effect, the lines of low frequency sides of existing lines are called what? Raman effect में हमारा जो लो फ्रीक्वेंसी वाला लाइन होता है उसको हम स्टोक्स लाइन बोलते हैं, और हमारा हायर वाला जो फ्रीक्वेंसी होता है, हायर वाला फ्रीक्वेंसी, उसको हम एंटी स्टोक्स लाइन बोलते हैं. ओके, लो फ्रीक्वेंसी लाइन दैट इज स्टोक्स लाइन. ऑप्शन बी इज आंसर. Thank you.